Student, today's video related physics chapter 1. इसके प्रीवियस वीडियो में आपने पढ़ा था about resistance. In this video we know about resistivity. We know R equal to rho L upon A and rho equal to R A upon L. This rho is resistivity. It is defined resistance offered by unit area per unit length. Its SI unit is ohm meter. Students, अभी तक हमने टू इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे इलेक्ट्रिक करंट, potential difference, but many scientists are trying to find what the relation between I and V. A scientist, James Prescott, a scientist, it is Ohm, states the relation between I and V. This is said to be Ohm's law. Very important question for exam. What is Ohm's law? It states that when all physical conditions of a conductor remaining same, constant, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference at its end. Mathematically, that is, V is proportional to I, or V equal to IR. R is a constant, that is resistance, or R equal to V by I. This is also the formula you need for numerical problems. Now, verification of Ohm's law. Verification of Ohm's law. एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है हमें. दिस इज ऑफ टू टाइप ऑफ क्वेश्चन. नंबर 1 बाय ग्राफ. अगर हमको बाय ग्राफ पूछते हैं तो वी शुड प्लॉट अ सिंपल ग्राफ बिटवीन आई एंड वी गॉट अ स्ट्रेट लाइन. और नंबर 2 बाय सर्किट डायग्राम. अगर हमको सर्किट डायग्राम बनाने के लिए कहते हैं तो हमें सर्किट डायग्राम बनाना है. वेरी सिंपल इट इज. फर्स्ट we are putting a cell, that is key. In series we are putting ammeter, that is unknown resistance, and it is a rheostat. Positive, negative, key is open. A voltmeter is connect parallel to the resistance. The direction of current you should make. It is a circuit diagram for Ohm's law. Ohm's law के लिए circuit diagram. Now our topic is how resistance connected. Resistance are connected in two ways. Number 1, series circuit. Number 1, series circuit. सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं? अब हमको एग्जाम में पूछा जाता है हाउ रेजिस्टेंस कनेक्ट इन सीरीज. फॉर दैट वी हैविंग एन एक्सप्रेशन. एक डेरिवेशन है छोटा सा. एक्सप्रेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज. Expression of resistance in series, that's you should asking to prove R equal to R1 plus R2 plus R3 and so on.
the sum total of individual resistance is the total resistance when they are connected in series. To prove this, we are making a circuit diagram. जैसे हमने यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस लिए हैं, तो हम यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस बना देते हैं. It is denoted by R1, R2 and R3. These all resistance are connected with a cell in series. Across them we are putting 3 voltmeter V1, V2 and V3. The current I flow in the circuit. In series the I is constant. सीरीज में I क्या रहता है? कांस्टेंट. इसका मीनिंग R1, R2, R3 सभी में करंट कांस्टेंट होता है. एंड V इज पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है? डिफरेंट होता है. अब हम इसके ऊपर प्रूव करने के लिए वी आर अप्लाइंग Ohm's law for circuit. I is equal to V by R or V is equal to I into R. Now by applying Ohm's law for individual resistor, and we get V1 equal to I R1, equation number 1, V2 equal to I R2, equation number 2, V3 equal to I R3, equation number 3. By combining equation 1, 2 and 3, we will get V1 plus V2 plus V3 equal to I कॉमन ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा R1 प्लस R2 प्लस R3. टोटल V इक्वल टू I R1 प्लस R2 प्लस R3, but I equal to VR. So putting value of I in the equation number 4, V equal to VR R1 प्लस R2 प्लस R3. ये V से V कैंसिल हो गया, therefore R equal to R1 plus R2 plus R3. Hence proved. ये चीज हमें प्रूव करनी थी. समटाइम एग्जाम में हमें 2 रेजिस्टेंस के बारे में भी दे सकते हैं और 4 के बारे में भी दे सकते हैं. That's all for